Good morning everyone and welcome to the class. We are now in the new chapter, that is Contemporary South Asia. We are going to revise the chapter. First of all, you must know that this South Asia is the region which has become of great importance in the global politics, especially after the nuclear explosion done by India as well as Pakistan in the year 1998, through which both the countries of this region have become nuclear power. And moreover, the region was also important from previous years also because of the conflict between the countries, like the most important problem which is existing in this region is the problem of Kashmir between India and Pakistan. So we will discuss the whole South Asia under this chapter, and before starting the discussion we must know the most important question, that is what is South Asia? Which of the countries constitute South Asia? Okay, and in this regard you must be aware of that India India and its neighbors, the whole region is known as Indian subcontinent. Indian subcontinent, it's a part of the continent which is secluded from other parts of the continent. तो यहाँ पर जब we are talking about South Asia, it's about the Indian subcontinent, in which the most important countries which are there in this, not the most important countries, but the countries which are there in the Indian subcontinent are India, Pakistan, then Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka and Maldives. These are the countries which constitute the countries of South Asia and the subcontinent, Indian subcontinent. So first of all, you must understand the meaning of subcontinent. Subcontinent हमारा जो Indian subcontinent है, इसको why we call it subcontinent? It's a large mass of land. It's a part of continent Asia, and the most important thing which make it subcontinent is its geographical location. What we see that in the north there is a Himalayan range. Then in the south there is Indian Ocean. Then in the eastern side of the region there is Bay of Bengal, and on the western side there is Arabian Sea. So what we see is the whole region is secluded. The whole region is isolated from other parts of the continent. तो ये जो secluded region हम देख रहे हैं, ये जो isolated region है, इसी को हम South Asia कहते हैं. यही हमारा Indian subcontinent कहलाता है. ओके, यहाँ पर वी आर कंसर्न विद साउथ एशिया. तो साउथ एशिया में वो जो पार्ट हमारा हिमालय से घिरा हुआ है नॉर्थ में, देन साउथ में हिंद महासागर, वेस्ट में अरेबियन सी, और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल. ये इनसे जो घिरा हुआ एरिया है दैट इज साउथ एशिया, और इसके अंदर जो कंट्रीज आते हैं दे आर कंसिडर्ड एज साउथ एशिया. So there should not be any kind of confusion. There are 7 countries in South Asia. ठीक है, the biggest country is our country India. In South Asia, India is the largest country. Then other than India, the other countries which constitute part of this South Asia are the neighbors of India. जो India के neighbors है
वो सभी साउथ एशिया में आते हैं। पाकिस्तान, देन नेपाल, भूटान, then Bangladesh, Sri Lanka, and Maldives. So these are the countries which are part of South Asia, these 7 countries. Okay, in this regard you must understand that the reason is secluded. ये सारी कंट्री जिस रीजन में है साउथ एशिया में वो सेक्लूडेड रीजन है। जियोग्राफिकल उसकी जो लोकेशन है, दैट लोकेशन गिव्स इट an isolated place, है ना। एंड बिकॉज ऑफ दिस व्हाट वी फाइंड कि यहाँ ये जो रीजन में लिंग्विस्टिक, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट है, कल्चरल जो एलिमेंट है, दैट इज़ वेरी डिस्टिंक्ट। बिकॉज यू कैन जस्ट इमेजिन कि बहुत पहले का जो समय है, जो हम अगर हिस्ट्री में जाते हैं तो ये रीज़न जो कि जिसका जियोग्राफी इस तरह की है, जो कि इसको सेक्लूड कर रही है, तो इसका आउटर वर्ल्ड से कनेक्शन था। इट्स नॉट कि आउटर वर्ल्ड से कनेक्शन नहीं था, सी रूट से आना जाना होता था, बट यहाँ का एक डिस्टिंक्टिव कल्चर डेवलप किया, एक डिस्टिंक्टिव लैंग्वेज, एक डिस्टिंक्टिव सोशल एलिमेंट्स जो हैं वो सारे यहाँ पर डेवलप किए। मतलब इसका कहने का ये मतलब है कि जो ये रीज़न है यहाँ की जो कल्चरल, सोशल एंड लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स है वो डिस्टिंक्ट हैं, अलग हैं, अपनी तरह की हैं, क्योंकि ये पूरा रीजन जो है वो आइसोलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम देखते हैं कि इनकी डिस्टिंक्ट सोशल, कल्चरल और लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, और इसमें एक वन मोर कंट्रोवर्सी इज देयर एंड दैट इज रिगार्डिंग द इंक्लूजन ऑफ द स्टेट्स। मेनी टाइम्स दो स्टेट्स जो है, दो कंट्रीज जो है, लाइक अफगानिस्तान एंड म्यांमार, these two are also included in South Asia. इनको भी साउथ एशिया में इंक्लूड किया जाता है कई बार, but in this chapter we will consider only these 7 countries under South Asia. These countries will not be considered under South Asia, though इसको माना जाता है, but here we are not going to consider these countries under the South Asia. हमारे स्टडी के अंदर हम बस ये 7 कंट्रीज को ही साउथ एशिया में कंसिडर करेंगे। अदर देन दिस चाइना इज ऑल्सो देयर, जो इसी रीजन में है, एशिया का एक बहुत बड़ा जाइंट है चाइना। लेकिन चाइना इज अ वेरी पावरफुल कंट्री एंड नॉट ओनली पावरफुल बट इट हैज इट्स इन्फ्लुएंस इन द साउथ एशिया ऑल्सो। तो इन्फ्लुएंस है बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया। ओके, चाइना को भी हम साउथ एशिया के अंदर बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। साउथ एशिया के अंदर हम बस यही 7 कंट्रीज हैं जिनके अंदर हम देखते हैं कि काफ़ी चीज़ें हैं जो कि उनको अलग भी करती हैं और काफ़ी चीज़ें हैं जो उनको जोड़ती भी हैं। वी कैन से कि इन दिस रीजन of South Asia, the countries are having mutual suspicion and trust. साथ साथ दोनों हैं। They are suspicious of each other also. They have trust upon each other also. There is rivalry. Rivalry is also there. Goodwill is also there. You can experience this rivalry as well as goodwill during an Indo-Pakistan cricket match. Whenever there is a cricket match between India and Pakistan, there is such a curiosity होती है लोगों में,
बहुत ज़्यादा स्पिरिट होता है, और ऐसा लगता है जैसे कि कोई वॉर चल रहा हो इंडिया और पाकिस्तान का. बाई लुकिंग एट द expression of the people, it seems that war is going on between India and Pakistan. So rivalry is there, but at the same time we see other fans. If fans come to India, the Pakistani cricket fans come to India in order to watch the Indo-Pakistan match, uh, or the Indian fans go to Pakistan to see the match, they are treated in a very well manner. उनको बहुत अच्छे से treat किया जाता है, बहुत अच्छी hospitality दी जाती है. तो rivalry के बावजूद क्या है, goodwill है. तो this is the distinct feature of our region कि we have rivalry. There is rivalry between different countries of South Asia. Still there is goodwill. There is a mutual suspicion. Still there is trust. There is hope. Still there is despair. तो ये सब चीज़ें जो है वो साथ साथ चलती हैं, बिकॉज वी कैन से कि जो ये पूरा का पूरा जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये रीजन, ये एक एरिया को, एक जियो पॉलिटिकल एरिया को ये इंडिकेट कर रहा है. दीज ऑल कंट्रीज आर बिलोंगिंग टू द सेम एरिया. तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से जुड़े हैं, जो कि हमारे अंदर गुडविल ला रहा है, जो कि हमारे अंदर होप ला रहा है, जो कि हमारे अंदर ट्रस्ट ला रहा है. बट देयर आर इश्यूज which are causing rivalry, there are issues which are causing mutual suspicion, and there are issues which are causing despair. So we will discuss about South Asia in this context only. Okay, and what we find, key first of all, in order to understand the politics of complete South Asia, what we require to understand the politics, domestic politics of all these countries. क्योंकि we can understand whatever is the domestic politics of a country, that very much reflect its activities in the international politics. Whatever a country does in international politics, that depend on the internal politics of the country. Domestic politics very much influences the international politics, है ना. तो first of all, in order to understand the politics of South Asia, we need to understand the domestic politics of all these states. Okay, and in these 7 states, what we find, there are 2 countries which we can say have been successful in establishing democracy, completely successful. These 2 countries are India and Sri Lanka. Okay. These 2 countries, India and Sri Lanka, are very much successful in establishing democracy, though there were problems. Like if we consider India, we see that it's not that our democracy is perfect. We have so many problems: the problem of poverty, the problem of unemployment, the problem of illiteracy, the social problems. So problems are there. Still we find कि हमारे यहाँ जो democracy रहा है, that is uninterrupted. There was a time between 1975 के जून से लेकर we can say कि 1977 के जनवरी तक का जो टाइम था, that was the time of emergency in India, in which democracy was suspended. But after this end of emergency, democracy was resumed in the country. Elections होते हैं and completely democratic country, democratic government जो है वो establish होती है. So we can say that the most important achievement of India is democracy. We are consistent in establishing democratic government in our country. Likewise, Sri Lanka is also successful. Both the countries got independence around same, मतलब 1947 में इंडिया ने independence मिला इंडिया को, and Sri Lanka got independence in the year 1948. और from that time
these countries are having democratic form of government. Sri Lanka में भी problems आई. We will consider that problem जो civil war आया between Sinhalas and Tamils. We will discuss it, but still we can say कि these two countries are democratic as a whole. They have remained democratic from their establishment, है ना. And now we see there are two different countries like Pakistan and Bangladesh. These two countries, in these two countries we find that there is democracy is not that successful, because many times democratic government is overpowered by the military rules. Democratic government is overthrown by the military rules. इस तरह की चीज़ें वहाँ पर होती रहती हैं. And there is a positive development in this regard after the end of Cold War. 1991 के बाद से we see कि इन दोनों कंट्रीज में पॉजिटिव डेवलपमेंट होते हैं टूवर्ड्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. बांग्लादेश में हम वी कैन से कि आफ्टर दिस कोल्ड वॉर there is democracy has been successful in Bangladesh after the end of Cold War. 91 के बाद से बांग्लादेश में मिलिट्री रूल नहीं आया है, रेगुलर इलेक्शंस होते रहे. हालांकि इलेक्शंस में प्रॉब्लम्स आए हैं. अगर हम आफ्टर 1991 के डेवलपमेंट्स को देखते हैं तो इलेक्शंस तो रेगुलर हुए, बट इलेक्शंस के रिजल्ट को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम आया. लाइक अपोजिशन पार्टी ने बहुत सारे एलिगेशन लगाए. स्टिल लार्जली ये जो कंट्री है वो 91 के बाद से डेमोक्रेटिक ही रही है. इलेक्शंस होते रहे हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही इस्टेब्लिश हुई है. एंड इफ वी सी द केस ऑफ पाकिस्तान, इन पाकिस्तान ऑल्सो there was effort to establish the democratic government like बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ. इन दोनों के गवर्नमेंट बनी जो कि टोटली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, which was formed by elections which was based on the universal adult franchise. तो बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया पाकिस्तान में. बट व्हाट वी सी कि इन 1999 वहाँ पर मिलिट्री कूप हो जाता है एंड परवेज मुशर्रफ कम्स टू पावर एंड दस डेमोक्रेसी वाज एंडेड देयर. बट अगेन इन 2008 this civilian government has been established in Pakistan, and Pakistan is really moving towards a true democratic country because वहाँ की सरकार ने 5 years कंप्लीट किए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने, और उसके बाद इलेक्शंस हुए. इलेक्शंस वाज लार्जली हम उसको कहेंगे कि पीसफुल इलेक्शन था. तो इट इज़ ऑल्सो गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी. And now we see the case of Nepal. In Nepal, what we find, Nepal was a constitutional monarchy. नेपाल जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी जिसके अंदर मोनार्की जो थे वो एग्जिस्ट करती थी. ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे 1991 में बना. बट व्हाट हैपेंड दैट 2006 में किंग ने सारे पावर्स को अपने 2002 में ही ये हुआ था डेवलपमेंट. वी विल डिस्कस दिस डेवलपमेंट इन डिटेल ऑल्सो. अभी आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द साउथ एशिया. तो नेपाल में क्या होता है कि 2002 में किंग जो है वो यूसर्व करते हैं पावर को, पार्लियामेंट के पावर को, देन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के पावर को, और डेमोक्रेसी वाज एंडेड इन नेपाल. एंड देन देयर वाज पीपल्स मूवमेंट, एंड देन इन 2008 monarchy was completely abolished from Nepal, and Nepal emerged as a democratic republic. So this is also a positive development towards the establishment of democracy. So we can say that yes, the countries of South Asia are moving towards democratic government. If we see the example of बांग्लादेश एंड नेपाल पर्टिकुलरली, पाकिस्तान में भी अब इस आज के समय में वहाँ पर भी सिविलियन गवर्नमेंट है.
इलेक्शंस हो रहे हैं, रेगुलर इलेक्शंस हो रहे हैं, तो पाकिस्तान इज ऑल्सो मूविंग इन दैट डायरेक्शन. ओके, तो now we will discuss two other countries, Maldives and Bhutan. Bhutan was a constitutional monarchy. In 2008 में इसको constitutional monarchy बना दिया गया. You must understand, you must be knowing the meaning of constitutional monarchy. Monarchy is there, king is there, but the king will not rule arbitrarily. The king will rule according to the rules of the constitution, है ना. constitution भी है और king भी है, and king is bound to act according to the provisions of the constitution. King is not having any absolute power or unlimited power. This is called a constitutional monarchy. So this constitutional monarchy, Bhutan became constitutional monarchy in the year 2008, and it has also adopted the multi-party democracy. Okay, and now we will see the case of Maldives. Maldives was a sultanate till 1968. Sultanate means the rule of sultan, king, monarchical system जिसको हम कहते हैं. It was a sultanate till 1968, but in 1968 there was transformation from this monarchical system to republic government. ये रिपब्लिक बन जाता है, एंड यू मस्ट बी नोइंग द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक ऑल्सो. रिपब्लिक इज when the head of the state is elected directly or indirectly, then the country is called republic. तो जो मालदीव्स जो अभी तक सुल्तान के लीडरशिप में था, जो कि एक हेरिडिटरी होता है पोस्ट, जस्ट लाइक किंग को ही सुल्तान वहाँ पे कहा जा रहा है, तो दैट transformed to a republic with a presidential form of government. वहाँ पर presidential form of government को adopt किया गया. तो इस तरह से then again there was development in the year 2005 when Maldives became a multi-party system. Maldives के अंदर भी multi party system आया, and that is very much important for a democracy. A true democracy must have this either bi-party or multi-party system. क्योंकि अगर सिंगल पार्टी सिस्टम है तो दैट इज नॉट डेमोक्रेटिक कंट्री. बट इन दीज टू कंट्रीज वी आर सीइंग द स्मॉलेस्ट कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया. दोनों ही कंट्री में, भूटान और मालदीव्स में, दे हैव गॉन फॉर मल्टी पार्टी सिस्टम. एंड in Maldives we see ki there is the most important political party is MDP, Maldivian Democratic Party. This MDP is dominating the political affairs of the country, and in the elections of 2018 this Maldivian Democratic Party won the election also. So we can say ki as a whole, the whole region is moving towards democracy, and it's a very very positive aspect. Okay, and we see that there is people why these countries, all these countries are moving in the direction of democracy, because it is the aspiration of the people. People want democratic government. That is why all these things are happening. अगर हम जो भी developments देख रहे हैं, whatever development is there in Bangladesh or in Nepal, and then in Bhutan and Maldives also, these all developments are because of people. अगर मिलिट्री रूल ख़त्म हो रही है, डेमोक्रेटिक रूल आ रही है, अगर मोनार्किकल सिस्टम ख़त्म हो रहा है, डेमोक्रेसी आ रही है, तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज चेंजेस? नॉट द गवर्नमेंट बट द पीपल, है ना. तो जो इन कंट्रीज़ के जो लोग हैं, नाउ दे आर एस्पायरिंग फॉर डेमोक्रेसी. एंड इस रिगार्ड में एक सर्वे भी किया गया है, और इस सर्वे में लोगों के एटीट्यूड को देखा गया है, जो कि जिसमें कि इस रीजन के 5 जो बिगर कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका एंड बांग्लादेश. यहाँ पर यू मस्ट नो कि ये जो 2 कंट्रीज हमारे हैं, भूटान एंड मालदीव्स, दे आर कंसिडर्ड बहुत ही छोटे कंट्री हैं. तो ये जो सर्वे हमने किया हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स के रिगार्डिंग, वो सर्वे जो है
ये बस ये 5 जो बड़े कंट्रीज हैं उनके ही बारे में की गई। ओके, एंड यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये जो सर्वे हुआ उसमें यही समझ में आया कि देयर इज वाइड स्प्रेड सपोर्ट फ्रॉम फॉर डेमोक्रेसी इन ऑल दीज कंट्रीज। हर जो कंट्री के लोग हैं दे आर सपोर्टिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, चाहे वो रिच हों या पुअर हों, चाहे वो किसी भी तरह से उनके बीच में डिफरेंट रिलीजन को वो बिलोंग करने वाले हों, उनका जो एटीट्यूड है दैट एटीट्यूड इज पॉजिटिव टुवर्ड्स डेमोक्रेसी एंड दे सपोर्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, व्हाट आर द इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के जो इंस्टीट्यूशन है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इज पार्लियामेंट। तो हर तरफ से पार्लियामेंट को सपोर्ट मिल रहा है एंड पार्लियामेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन अ डेमोक्रेसी बिकॉज इन पार्लियामेंट पीपल आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल आर देयर। They discuss the matters of national importance. They put pressure on the government. तो पार्लियामेंट जो है वो बहुत ही पावरफुल होता है डेमोक्रेसी में और वही रिप्रेजेंट करता है डेमोक्रेसी को। एक्चुअली when we say democracy is a rule of the people, actually it's not a rule of the people, but it's a rule of the representatives of the people, and these representatives are there in the parliament, है ना। तो इन सारी कंट्रीज में जो ये स्टडी हुआ है, जो सर्वे हुआ है, उसने यही प्रूव किया है कि जो पीपल हैं दे आर सपोर्टिव ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी दैट इज पार्लियामेंट। दे पीपल प्रेफर डेमोक्रेसी ओवर एनी अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट and they think that democracy is suitable for their country. So जो majority of the people है they are supporting democracy. They are of the opinion that democracy is suitable for their country. Okay, so this is very important survey. The results are really important because earlier it was believed that democracy could flourish only in prosperous countries of the world, like democracy started in the European countries, है ना। अगर हम हिस्ट्री देखें, डेमोक्रेसी की हिस्ट्री को देखते हैं, तो जो फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेसी आया, दैट फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेसी वाज ओनली इन द यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका एंड यूरोप। यही कंट्रीज थे, कॉन्टिनेंट्स थे जिनकी कंट्रीज ने डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया इन द फर्स्ट वेव। जो कि हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखते हैं, देन अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ऑल दीज वर द हैपनिंग्स ऑफ 18th सेंचुरी, है ना। तो उस समय से वहाँ पर डेमोक्रेसी की एस्टैब्लिशमेंट होनी शुरू हो जाती है, जबकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी को वी वर नॉट अवेयर, वी वर नॉट नोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी एट दैट टाइम। हालांकि अगर एंशियंट टाइम को देखें तो वी आल्सो हैव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जैसे वज्जी हमारा जो संघ थे उसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था, बट इन मॉडर्न टाइम वी वर नॉट अवेयर ऑफ डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो इसकी स्टार्टिंग जो हुई वो यूरोपियन कंट्रीज में हुई और इट वाज बिलीव्ड कि डेमोक्रेसी कैन फ्लरिश ओनली इन कंट्रीज विच आर रिच। अ पुअर कंट्री कैन नॉट अफोर्ड टू बी डेमोक्रेटिक, इसमें डेमोक्रेसी सर्वाइव कर ही नहीं सकती है। तो जब साउथ एशिया में हम देख रहे हैं कि साउथ एशिया इज वन ऑफ द बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री, बिकॉज यहाँ पर जो भी कंट्रीज हैं साउथ एशिया के, दे वर द अंडर द कॉलोनियल रूल, दे वर अंडर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ देयर कॉलोनियल पावर। तो ये सारे जो रीजन है, कंट्रीज हैं इस रीजन के, वो काफ़ी कुछ उन्होंने झेला हुआ है और दे आर द पुअर कंट्रीज। अगर इंडिया को भी हम देखें तो दो वी आर शोइंग वेरी गुड इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टिल वी हैव 23% ऑफ द पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। तो हम ये पूरा का पूरा रीजन जो साउथ एशिया है वो पुअर कंट्रीज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टिल वी सी कि वहाँ पर डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें हम क्या देखते हैं कि इस कारण से जो डेमोक्रेसी वहाँ पर सक्सेसफुल हुआ है, इसने इस एजम्पशन को रॉन्ग प्रूव कर दिया कि डेमोक्रेसी कैन बी सक्सेसफुल ओनली इन द प्रॉस्पेरस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ओके,
तो in the next class we will discuss the result of the survey in detail, and then we can understand how in which direction the countries of South Asia is going, the particularly different countries का किस तरह का growth हो रहा है, development हो रहा है, उसको हम लोग consider करेंगे. And in this regard you must understand the difference between human development and economic development, because we will discuss this in the next class. इसके जो डेटा है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सी कंट्री ह्यूमन डेवलपमेंट में कहाँ पर है और साउथ एशिया की कौन सी कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कहाँ पर है. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हैं, लाइक इंडस्ट्री, सर्विस, ट्रेड, ये सारे सेक्टर्स में कैसा ग्रोथ हो रहा है, एग्रीकल्चर, उस कितना ग्रोथ रेट है, क्या हमारा जीडीपी है, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट. बट व्हेन वी सी कि ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसा हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स को एजुकेशन मिल रहा है या नहीं, ह्यूमन रिसोर्स को हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही है या नहीं, तो जब हम ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट को देखते हैं तो दैट इज कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट. एंड बोथ दीज आर डिफरेंट थिंग. इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते हुए भी कहीं पर ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, और कहीं पर ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसके अकॉर्डिंगली शायद उतना अच्छा नहीं हो. तो वी विल डिस्कस ऑल दीज इन द नेक्स्ट क्लास.